हेलो फ्रेंड, आज हम 10th क्लास का लेसन लाइफ प्रोसेस शुरू करने वाले हैं। देखिए, लाइफ प्रोसेसेस में कौन कौन सी प्रोसेस इंक्लूड होती हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जो प्रोसेस चाहिए उन सब प्रोसेस को लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ऑल द प्रोसेसेस सच एज रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, circulation, excretion that are necessary for the survival of living organism are known as life processes। यानी कि ऐसी सारी प्रोसेस जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी हैं उनको लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। So here in this chapter we will study different life processes which are necessary for survival of a individual of an organism. For example, nutrition, respiration, circulation, and excretion. As we have studied in class 9, there is huge biodiversity, means organisms from unicellular to complex multicellular organisms exist on earth। सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेके मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स तक प्रेजेंट होते हैं। सो इस लेसन में ब्रीफली हम इन सारी प्रोसेसेस को पढ़ेंगे कि कैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन मैनेज करते हैं, हाउ दे ऑब्टेन फूड। मल्टीसेलुलर में क्या मैकेनिज्म होता है, कैसे उनमें रेस्पिरेशन होता है, हाउ दे यूटिलाइज एनर्जी का यूज कैसे करते हैं, फिर उसको सर्कुलेट कैसे करते हैं, देन उसको जो भी वेस्ट है उसका एक्सक्रेट आउट किस तरह से होता है। दैट ऑल वी विल डिस्कस इन दिस लेसन। ओके, सो लेट्स फर्स्ट in this particular video we will talk about nutrition। सिर्फ न्यूट्रिशन से ही रेस्ट्रिक्ट करेंगे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट रेस्पिरेशन। सो न्यूट्रिशन से आप क्या समझते हैं? इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। और फूड हम क्यों लेते हैं? हम ग्रोथ के लिए लेते हैं, रिपेयर के लिए लेते हैं, सर्वाइवल के लिए लेते हैं। So how we will define this nutrition? It is the process of obtaining food which is necessary for repair and growth. Here we can also include term health. So we can define it like this: the process of obtaining food necessary for health and growth। अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे डेली लाइफ में we need balanced diet। Balanced diet means the diet should include like we have studied component of food in class 9। It must have carbohydrate, protein, vitamins, fat, minerals। These all components should be included in our diet in such a manner that we can get all the necessary nutrients, component जो भी हमें चाहिए सारे फूड से हमें मिल पाए। एंड दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर आवर ग्रोथ एंड हेल्थ। हमारी ग्रोथ और हेल्थ के लिए बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं। So this is the process of obtaining food necessary for repair and growth is known as nutrition। Okay, there are the two basic mode of nutrition, there are modes of nutrition: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition। So nutrition के दो modes हैं। The major mode of nutrition are autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition। In autotrophic nutrition, the living organism make their own food, they synthesize their own food। अपना food खुद बनाते हैं ये organisms। In heterotrophic, they are dependent on other organism, वो दूसरे पे dependent होते हैं। So let's see first autotrophic nutrition। It is a type of nutrition in which inorganic materials such as carbon dioxide is used up to synthesize organic food by process known as photosynthesis। ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जैसे इनऑर्गेनिक मटेरियल से
फूड सिंथेसाइज करते हैं. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. क्या है? It is the process of synthesis of organic food from carbon dioxide and water. For that, chloroplast is required by the plant and sunlight is necessary as a source of energy. Sunlight भी necessary होती है. Let's see. For example, the green plant use autotrophic mode of nutrition. Any other example like blue-green algae, cyanobacteria, also photosynthetic. So they are autotrophs. Organism which uses autotrophic mode of nutrition are known as autotrophs. So what are the examples of autotroph? All the green plants are example of autotroph. And another example, cyanobacteria or blue-green algae is an example of autotrophic nutrition. So here see the process of photosynthesis. This is the chemical equation for process of the photosynthesis. It is not balanced equation, but simple equation of the process of photosynthesis. So from this equation, we will define process of photosynthesis. So हम define करेंगे. See here what we have as a raw material. Substrate क्या है इस reaction में? We are having here carbon dioxide molecule and water molecule. These are the raw material. Please note down what are the raw material for the process of photosynthesis. Carbon dioxide and water is the raw material. Then we have here solar radiation. यहाँ पे solar radiations नजर आ रही हैं. So this is sun's energy. So what is the source of ultimate source of energy for the process of photosynthesis? Sunlight is the source of energy. Clear? Another thing. So where this process occurs, what is the site of photosynthesis where photosynthesis occurs? So photosynthetic pigment chlorophyll is required, and this chlorophyll is present in chloroplast in higher plants. Higher plants में ये chlorophyll कहाँ present है? Chloroplast में present है. और chloroplast plants के लिए mainly कौन से part में present है? Where it is present? The chloroplast जो है वो chloroplast is present in where? In the mainly in the leaves of the plant. Plant की leaves में ये present है. Okay. So इससे बनता क्या है? What is the byproduct of the photosynthesis? So a sugar is synthesized. This is the glucose. A carbohydrate is synthesized. A carbohydrate इसमें synthesized होता है. So byproduct is carbohydrate or glucose with the release of oxygen. So from these we have to define process of the photosynthesis. Okay, so we can define it in these words. It is the process of synthesis of carbohydrate from carbon dioxide in water in the presence of sunlight by chloroplast with the release of oxygen. This is the process of photosynthesis. ये photosynthesis की process है. Okay, one question for you guys. You have to make the balanced equation for this process of photosynthesis. आपको इस equation को balance करना है. Okay, so this photosynthesis, where is what is the site of photosynthesis in the plant? Leaf is the site of photosynthesis in the plants. Plants में photosynthesis. तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस? स्टेप्स इन द फोटोसिंथेसिस आर एज फॉलो. द फर्स्ट वन इज, सबसे पहले क्या करेगा? सनलाइट को कैप्चर करना है. दैट इज फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इन हायर प्लांट्स, and chloroplast is mainly present in green leaves, green parts of the plant, mainly in the leaves. ये जो लाइट एनर्जी इन्होंने कैप्चर की है उसका क्या यूटिलाइज करता है? That light energy is converted into chemical energy. Chemical energy for the cell is ATP. ATP के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेता है. आपके लिए क्वेश्चन है कि ATP का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? एक मॉलिक्यूल ATP से कितनी एनर्जी रिलीज होती है? ओके, refer your textbook and find these two answers.
The first step is absorption of light by chlorophyll. The second step is conversion of light energy into chemical energy. The third, then, this energy is used in splitting of water molecules. Water, you know, it has H2O molecule. So the splitting of water into hydrogen and oxygen. Water molecule जो है hydrogen और oxygen में split होता है. And finally, actual biosynthesis process होती है, biocarboxylation की process, carboxylation की process होती है. So that is finally reduction of carbon dioxide into carbohydrate. Finally इससे carbohydrate formation होता है. So these are the steps, these are the process of photosynthesis in plants.